So guys, it's already 11:50 p.m. night. So in this short session, we will discuss on our Mughal history session, and in this part, we will discuss what are the uh, Mughal paintings which reached zenith during the time of Jahangir. So we'll discuss करते हैं हम लोग the foundation of Mughal school of painting was laid by Humayun itself during the exile. क्योंकि पता है जब हुमायूं जब इंडिया और हिंदुस्तान सरजमीन से छोड़ के भाग गए थे, फिर शेरशाह ने उसको बहुत परेशान किया था। तो हुमायूं जब वापस लौट रहे थे तो उसने एक बहुत अच्छे पेंटर्स लाए थे, है ना। उसका नाम था सैयद अली और अब्दुल समद, है ना। उसको उसके साथ वो आए, वो लोग ये दोनों पेंटर्स हुमायूं के साथ आए और बाद में एक तरह से पेंटिंग का शुरुआत हो गया। तो चूंकि बाबर को भी एक पेंटिंग बहुत पसंद था, बाबर को भी पेंटर्स जैसे कि बीजाद, बाबर के टाइम में बीजाद वगैरह पेंटर्स हुए करते थे, और तो कहीं ना कहीं बाबर ने बीजाद को उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। तो उसी तरह हुमायूं ने भी अपना दिलचस्पी दिखाया और बाकी जो रूलर्स हैं उसने फर्दर कंटिन्यू किया। फॉर एग्जाम्पल अकबर ने कंटिन्यू किया, फिर जहांगीर तो खूब किए थे। इसलिए तो आप जानते हैं हम लोग किस तरह से जब हुमायूं एग्जाइल गया था पर्सिया में और अफगानिस्तान में, तो बिजाद द मास्टर पेंटर वाज एट द हाइट ऑफ हिज फेम एट द टाइम। उसी टाइम में भी बिजाद बहुत बड़े अपने हाइट पे थे। तो हुमायूं कहीं ने पेट्रोनाइज मेनी ऑफ हिज डिसिपल्स एंड टू ऑफ देम मीर सैयद अली अब्दुल समद ज्वाइन हिम इन अफगानिस्तान एंड देन मूव विद हिम टू दिल्ली। तो कहीं ना कहीं उसको अफगानिस्तान में जैसे मिल गए मीर सैयद समद समद समेत अली और सैयद अली और अब्दुल समद, उसको अफगानिस्तान में मिल गए और बाद में क्या किया उसने, दिल्ली आ गए हुमायूं के साथ। Akbar was very fond of painting and during his reign painting was organized in imperial establishment of कारखाना। I told you उसका तस्वीर खाना हुआ करता था। The painter's themes included war, hunting, mythical beings, building activities। अगर हम बात करें थीम का बात करें तो कहीं को वार होता था थीम में, हंटिंग सीन्स होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मुगल जो है हंटिंग को पसंद करते ही थे। मुगल्स were loving the huntings, killing the tigers and killing lions at the time, so they used to love hunting. And obviously what they used to love they will obviously portray on a paper as in the form of painting. So hunting scenes, warfare, strategy, mythical beings, yes, building activities. However, there were little scope for specialization. Two or even three painters could be used to complete the picture. At the time, basically two or three painters could be used to complete the picture, right? So उस टाइम में ये होता था। अंडर अकबर पेंटिंग वाज लार्जली कन्फाइंड टू द इलस्ट्रेशन ऑफ हिस्ट्रीज एंड क्रॉनिकल्स। बिकॉज अकबर के टाइम में अबू फजल जैसे बहुत बड़े एक तरह से हिस्टोरियन तो नहीं कहेंगे हम, बहुत बड़े एक तरह से ओनली सिलर्स कह सकते हैं या राइटर्स कह सकते हैं, है ना। बहुत बड़े एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको हम, एक ऑथर कह सकते हैं, हाँ राइटर्स ऑथर कह सकते हैं, है ना। तो उस टाइम में ये अबुल फजल वगैरह तो लोग लिखते थे। अकबर के जो ये अकबरी वगैरह लिखे हैं, है ना, सारे उसी के द्वारा लिखा गया है ना। तो कहीं न कहीं और अखबारनामा इसको भी बोलते हैं हम लोग। तो कहीं न कहीं इसलिए उस टाइम में क्या होता है, बेसिकली क्रॉनिकल्स का, हिस्ट्रीज़ का इलस्ट्रेशन होता था। हाँ, और इससे अकबर को कहीं न कहीं एक हेल्प मिला कि भाई मेरा जो डॉक्ट्रिन है और आइडियोलॉजी है उसको हम इस हिस्ट्रीज़ और क्रॉनिकल्स के द्वारा हम अपने आइडियोलॉजी को क्या करें, प्रस्तुत कर सकें मेरे आने वाले जनरेशन के लिए। So Akbar also commissioned portrait miniatures, but its real development happened during Jahangir। कहीं ना कहीं पोर्ट्रेचर का जो पेंटिंग जो होता है ना, पोर्ट्रेचर पेंटिंग, तो अकबर ने भी शुरू किया, लेकिन इसका रियल डेवलपमेंट जहांगीर हुआ और उससे भी हाई डेवलपमेंट शाहजहां के टाइम में हुआ था। द केस ऑफ प्रोग्रेस कैसे रहा, काउज ऑफ प्रोग्रेस क्यों हुआ जहांगीर के टाइम, आखिर क्यों हुआ काउज ऑफ प्रोग्रेस पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, क्यों हुआ आखिर? इसलिए हुआ क्योंकि ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। जहांगीर established a gallery of painting in his own garden। अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो अपने गार्डन, अपने बगीचे जो थे, उसने उसी में बगीचे में गैलरी स्टैब्लिश कर लिया था जहांगीर ने। ही आल्सो गॉट कंप्लीटेड द वर्क्स टेकन अप बाय द आर्टिस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो उसी टाइम में जो अकबर के टाइम में जो भी आर्टिस्ट वगैरह रहे थे उस वही आर्टिस्ट को उठा लिए वो लोग। तो अकबर जहांगीर ने भी वही आर्टिस्ट को एक कंटिन्यू फॉरवर्ड किया अपने शासनकाल में। तो आल्सो फाइनली
Jahangirnama written during his lifetime, which is autobiographical account of Jahangir reign and has several painting. तो पेंटिंग जो बात करें, पेंटिंग कहाँ मिलता है अकबर के टाइम का, जहांगीर के टाइम पे तो जहांगीरनामा मिलता है. These are the these were the miniature paintings, ये जो जहांगीरनामा इस पोजीशन है वहाँ पूरा just you will like find right, you will find just histories and all text, but in this in this book you will also find miniature painting or in the form of albums, right. उसको मुराक्स बोलते थे. He patronized many artists in the and his at his court. Obviously, उस्ताद मंसूर जो बहुत बड़े एनिमल एक तरह से थे वो, उसको एक एनिमल पेंटिंग करते थे, एनिमल पेंटर थे, उसको टाइटल दिया गया नादिर उस असर. इस नादिर उस असर को टाइटल दिया गया उसको उस्ताद मंसूर को. अदर्स प्रोमिनेंट कोर्ट्स अबुल हसन भीषण दास आगा राजा. बाकी जो पेंटर्स हुए थे तुम्हारा अपार्ट फ्रॉम उस्ताद मंसूर यू विल फाइंड बिसन दास, अबुल हसन, बहुत बड़े जाने माने जो तुम्हारे पेंटर्स रहे हैं. अबुल हसन बहुत बड़े थे उस समय. उसके बाद आगा राजा भी थे. उसके बाद अगर हम बात करें, ही हिमसेल्फ पोजेस नॉलेज ऑफ पेंटिंग. जहांगीर को खुद अपना नॉलेज ऑफ पेंटिंग था, ऐसा नहीं कि उसको वो बोलते थे कि ही हैड वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग आई व्हिच ही कुड बी जज द पेंटिंग. In his biography to the Jahangir, he claimed to tell the name of painters after seeing the painting. Yes, जहांगीर को अपने बारे में बोलते हैं भाई कोई भी पेंटिंग मेरे सामने लाओ, हम बता देंगे ये पेंटिंग किसके द्वारा ये ड्रॉ किया गया. तो जहांगीर कहीं कहीं आए बहुत एक तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग था उस टाइम में. ये टाइटल याद रखना, नादिर असर. असर नहीं होता है मंसूर को असर नहीं होता है कि मेरा पेंटिंग कोई खराब बोले अच्छा बोले. वो पेंटिंग वो करता ही है, जानवरों का पेंटिंग आता है, उसके बोलता मुझे कोई असर नहीं होता भाई मेरा पेंटिंग को कोई भी अच्छा बोले या खराब बोले, क्योंकि मैं जानवर का पेंटिंग बनाता हूँ. तो नादिर असर. अगर बात करें स्पेशल फीचर्स ऑफ पेंटिंग जहांगीर में क्या है, तो इन्फ्लुएंस यूरोपियन पेंटिंग. पहली बार जो जहांगीर के टाइम में कहीं ना कहीं यूरोपियन का एलिमेंट है बहुत तरह से देखा गया. कैसे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल्स यही है कि उनके शासनकाल में देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ इंग्लिश विद इंग्लिश क्राउन. तुरंत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ एंड वाज सेंट गिफ्ट टू ऑयल पेंटिंग. तो इंग्लिश क्राउन के साथ जैसे ही जहांगीर का कॉन्टैक्ट हुआ तो उसने क्या किया कि गिफ्ट्स भेजा. ऑयल पेंटिंग किसको, जहांगीर इसको किसको भेजा, तो भाई जो इंग्लिश क्राउन है, गिफ्ट ऑयल पेंटिंग गिफ्ट भेजा विच इंक्लूडेड पोर्ट्रेट ऑफ किंग एंड क्वीन. तो जैसे ही जो गिफ्ट जो भेजा गया उसमें किंग और क्वीन का पोर्ट्रेट था. जहांगीर encouraged his royal art atelier to take up the single point of perspective favored by European artists. तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूरोपियन जो पर्सपेक्टिव हो सिंगल फेवर, तो वो बोलते भाई हम इसी चीज पे काम करेंगे, एक ही चीज में रहेगा, उतना मल्टीपल डाइवर्सिटी रहेगा. तो कहीं ना कहीं जहांगीर ने उसको एक तरह से उसको फेवर किया. ठीक है. Unlike the flattened multi-layered style used in traditional atmospheres. इंडिया में क्या होता था, हम भाई बाग बगीचे हर तरह के जानवर जानवर you know everything we used to portray in a just a painting, single painting. अभी भी बहुत सारे पेंटिंग है, तो we are not just painting making painting on only one aspect of object. We are making a single painting with various objects with various elements. While in European style you will find that there is unilayer painting, right. There is single layer painting. You won't find much diversity in European painting. So Jahangir also endorsed the idea that okay, let's have a single element पेंटिंग. तो कहीं ना कहीं जहांगीर का एक ये यूरोपियन पेंटिंग पे उसका कंट्रीब्यूशन है. बाकी दूसरा कंट्रीब्यूशन भाई उसने इंग्लिश क्राउन को क्या किया, अपना एक तरह से ऑयल पेंटिंग राजा और रानी का एक तरह से उसको भेजा. तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि उसने जो तुम्हारे रॉयल आर्टलियर जो है उसको इंकरेज किया, भाई आप उसको सिंगल पर्सपेक्टिव का पेंटिंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना. ये सब चाहिए उसका एक है. बाकी इमरजेंस ऑफ एल्बम पेंटिंग, अगर हम बात करें जहांगीर के टाइम में, यू विल फाइंड दैट देयर इज इमरजेंस ऑफ एल्बम पेंटिंग. यस, नेटिव पेंटिंग डिक्लाइन and superseded by album painting, a painting of animals, birds, and flowers and portraits made up not of illustration of the book out when it was not just illustrated in the books, but you will also find individual work of art to be mentored. एल्बम में खास तरह से बस ऐसा नहीं कि बस एल्बम में बस हाँ जानवरों का और पक्षी का फ्लावर्स का पोर्ट्रेट इलुस्ट्रेट कर दे बस. स्पेशल से भाई हम जानवरों का पेंटिंग बनाएंगे, स्पेशल से हम पोर्ट्रेट करेंगे, स्पेशल से हम क्या बोलते हैं बर्ड का फ्लावर का पेंटिंग बनाएंगे. तो कहीं इसको नेचर में जो प्रति इंटरेस्ट है जहांगीर का बहुत एक झलकता है. तो प्रोपरली कैटलॉग पेंटिंग, अगर बात की जहांगीर के टाइम में, यू विल फाइंड दैट इट वाज लाइक वन इमरजेंस एल्बम पेंटिंग, दूसरा वाला इमरजेंस ऑफ इन्फ्लुएंस यूरोपियन पेंटिंग का इन्फ्लुएंस इमरजेंस नहीं कहेंगे. तीसरा पॉइंट का इमर्ज प्रोपरली कैटलॉग पेंटिंग उसके टाइम हुआ. कैसे पेंटिंग क्रिएटेड अंडर जहांगीर रेन वेयर क्लोजली कैटलॉग, है ना.
dated, and even single sign, providing fairly accurate ideas as to when and in what context many of the pieces were created. देखो, कहीं ना कहीं कैटलॉग क्या होता है कि if you say catalog, it means like I'm cataloging something. I'm integrating, or I am joining the several pieces into one form, and into one single-handedly objects, single-handedly you can say story, right, or in a single-handedly pieces. So I'm integrating several pieces into a single-handedly pieces. तो कैटलॉगिंग का मतलब ये होता है people's paintings created in Jahangir reign were closely catalogued, and when I say catalog also means dating and also sign catalogs, history का word catalog करना जैसे, so properly you arrange, right, you just sign, you just write date when it will be, when it was painted, and by whom it was painted. So those, during Jahangir time you will find that there was catalog painted, means when by whom it was painted, when it was painted. So it was like something, a kind of a record of history was creating, right. So the catalog word is basically used for the record of history. So it provided fairly accurate ideas as to when and in what context many of the pieces were created. Yes, in what context I am creating these pieces. So you will write everything. You will write all about history aspects. This is the one aspect. It's very important. जहांगीर टाइम ये होना कहीं ना कहीं हिस्ट्री का सेंस दिखा रहा है, हिस्टोरिकल सेंस यू विल फाइंड दैट. और उसके बाद तो चौथा पॉइंट है मोर रिफाइंड पेंटिंग. कैसे भैया पेंटिंग बिकम मोर smaller in scale, lighter in palette, and more exquisite, intended for canonization or delectation. So during the Jahangir period, you will find that brush works became finer and color of the lighter, right? So Jahangir was the time period when it will find it was it could be find that you will find that there was a brush, use of the brush were highlighted during Jahangir time, right? Apart from that, the paintings can become much more refined and it become much smaller in scales. Unlike other emperor, you will find that they were large and big painting, right? So during Jahangir time, you will find that the painting were very small and lighter in the palette and even more exquisite. In intended for colonizer delectation. Yes, brushworks was also emphasized during time. The colors were very lighter. Yes, but शाहजहां के टाइम में you will find that the colors का use बहुत से ज्यादा होने लगा. इतना हो गया कि भाई gold का gold color they were using. Shahjahan was using gold colors, and it make painting so much bright and become so much dull, right? So that was not good paintings. But during Jahangir time, it was very much good. शुरुआत होगी, हालांकि इसका जो डेवलपमेंट शाहजहां ने बहुत हद तक ये जहांगीर कर दिया था. Apart from painting hunting, battles, and court scenes, under Jahangir, special progress was made in portrait painting. He particularly encouraged the painting depicting events of his own life. So Jahangir was very famous or very fond of depicting his own life through the mediums of portrait. उसके बाद नेचर पेंटिंग का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक तरह से शुरुआत हुआ था. क्योंकि जहांगीर के टाइम उस्ताद मंसूर था, तो उसने क्या किया कि एनिमल्स प्लांट्स का पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, राइट. और कहीं ना कहीं उसका जो मिलिट्री एग्जीबिशन होता था, है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि फाइनेंस हाउ टू मैंने प्लान विच जहांगीर आइदर इनकाउंटेड. कैसे जहांगीर जब अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन पे था, जहांगीर जब अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन पे था, तो उस टाइम में जहांगीर जो भी देखता था एनिमल्स, यू विल फाइंड बर्ड्स, all birds and animals were painted by the Ustad Mansoor, right? And also, whatever the animals and birds and you can say plants which were received by Jahangir, all things were painted during the time of Jahangir by the Ustad Mansoor. So you can say all the objects received by Jahangir during his international relation, right? So you will find they are depicted in the form of painting. So what were the problems? We have all discussed about this, but what were the problems were that the though paintings reached its climax during Jahangir, it still had shortcomings. For example, despite very lively studies of animals and birds, the Mughal painters had little interest in the study of nature independently. See, you will find that hell lot of things, but as far as studying the nature independently is concerned, you won't find it. So this is highly lacking in the time. So there was painters had little interest in study of nature independently. Though you will make paintings of nature element, but you had not interest. You have very little interest in the study of nature independently, right? दूसरा पॉइंट का lives of common mans were not accepted as mediums to depict the paintings.
So you won't find lives of common mans were not accepted as a medium to depict the painting. The art did not come close to the lives of common mans and remained limited to emperors and nobles. So कहीं न कहीं ये जो you can say so I was disconnected for the short time. Anyway, so I was disconnected for a short period of time. So anyway, there was a power cut off. So saying Sawain Singh was astronomer. So he was not just astronomer; he was also translated Euclid element of geometry. यूक्लिड एलिमेंट को उसने भी कहीं न कहीं इसको जो तुम्हारा यूक्लिड के जो जो वो उसको भी ट्रांसलेट सवाई जैसी
और उसने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी को स्टडीज़ किया, खोजबीन वगैरह में एरिया में अपना एस्ट्रोनॉमी को। और हम बात करें औरंगज़ेब के शासनकाल में ही जो सवाई जयसिंह थे, कहीं तो मसलदारी का पोस्ट उसने हेड करते ही अपार्ट सो बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बात होती रहती है। So anyway, so we were talking about the Savai Jai Singh roles in astronomy. So further we are moving ahead. That no, it comes no comes. What are the astronomical observations made by the Savai Jai Singh? So he was the founder of five major observations. I told you called Jantar Mantar at Delhi, Jaipur, Ujjain एक है, मथुरा है, and बनारस of its last three are now extinct. लास्ट का थ्री है, जैसे कि उज्जैन, मथुरा, बनारस पे कोई जैसे कुछ
थी निशान नामो निशान नहीं, बस लेकिन दिल्ली जयपुर जो है वहाँ पे अभी भी तुम्हारा एक तरह से ऑब्जर्वेटरीज है। करेक्ट। सो कहीं अगर हम बात करें जो सवाई जैसी उसके बाद उज्जैन बनाया, फिर जयपुर में बनाया, मथुरा में बनाया, बनारस में बनाया, तो कहीं भी सारे जगह में ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश करती है। यू कैन सी इसको स्टार वगैरह में कितना इंटरेस्ट रहा होगा। तो ऑब्जर्वेटरी कंसिस्ट ऑफ ज्योमेट्रिक डिवाइसेस फॉर मेजरिंग द टाइम, प्रेडिक्टिंग eclipse, tracking stars, locations, ascertaining the declinations of planets, and determining the celestial attitude। कहीं न कहीं उसको ये था इंटरेस्ट। A sundial was a very much precise which can be used to tell the time to an accuracy of few seconds। तो कहीं न कहीं sundial का भी सुन यूज़ किया, तो he was also using the sundial can very much uh, was very much you can say used to tell the time up to an accuracy of few seconds, to an accuracy of few seconds। So it was very much there। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का बात करें, जिसको नाम था जिज, उसका नाम था एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का नाम क्या था, जिस नाम था। तो as he found the prevalent astronomical tables is to in use at the time uh, defective, he decided to prepare new ones। जैसे उसने देखा as he found the prevalent astronomical tables जैसे हैं to in use at the time डिफेक्टिव हो गया है, जो पुराने जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स हुआ करते थे वो क्या हुआ, डिफेक्टिव हो गया है। तो उसने क्या किया कि उससे बोला भाई चलो नया बनाते हैं। and therefore he constructed a huge instrument in observatory at Delhi। इसलिए बड़े बहुत बड़े एक तरह से इंस्ट्रूमेंट एक तरह से उसने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया इन ऑर्डर टू इन ऑब्जर्वेटरी एट दिल्ली। He constructed instrument of the same type in Jaipur, Mathura, Banaras, Ujjain observatory। He produced a set of astronomical tables called Jadid e Muhammad Sahi। तो उसने एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को प्रिपेयर किया, उसका नाम था जिज ए जदीद ए मोहम्मद शाही। जो मोहम्मद शाह के अंदर वो काम करता था, तो उसने एक तरह से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बना दिया। एक तरह से उसका नाम था जिज ए जदीद ए मोहम्मद शाही, जीज ए जदीद ए मोहम्मद शाही। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद ये जो जदीद मोहम्मद शाही है, फर्स्ट सेक्शन डील्स विद द कैलेंडर, सेकंड डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, एंड थर्ड कवर्स द मोशन ऑफ द सन, मून एंड द रेस्ट ऑफ प्लैनेट इक्लिप्स। इसको इन चैप्टर वाइज इसको डिवाइड करते। पहला जिसको डील किया गया, ये कह रहा है कि भाई हम कैलेंडर डील करेंगे। कोई भी चीज होता है कैलेंडर की शुरुआत हम पहले से करते हैं। तो कैलेंडर ये बताता है कि हमारे हिस्टोरिकल सेंस और किस चीज ये प्लानिंग को हमें शो करते हैं, भाई इस डेट को ये काम करेंगे हम। तो पहला इसने जो जे मोहम्मद शाही जो बनाए दोबारा उसने की, पहला सक्सेस में कैलेंडर डाल दिया। उसके बाद दूसरा डिटरमिनेशन हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडी किस तरह डिटरमाइन होगा उसको ये बताया। थर्ड को बताया कि कैसे मोशन ऑफ सन कैसा होगा, तो सन का मोशन कैसे होता है वो बताया। मून कैसे होगा, रेस्ट ऑफ प्लैनेट कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा एस्ट्रोनॉमी की जो बात करते हैं कि भाई हम कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सन कैसे मूव कर रहा है ना। उसके बाद मोशन कैसे मूव कब आएगा, ये सारे बात कहीं कहीं जो चीज़ें मोहम्मद शाही में किया गया, मोहम्मद शाही में ये बताया। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स हुआ करते उस टाइम में। तो कहीं न कहीं ये जो पुराने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ऐसे नहीं होते थे। इसका मतलब कहीं न कहीं एस्ट्रोनॉमी पहले से था। गुप्ता के टाइम में तो बहुत अच्छा खासा डेवलप हुआ था एस्ट्रोनॉमी। तो कहीं न कहीं जो बाद में जो टेबल्स बनाने की कोशिश किया गया, 18th सेंचुरी में बनाने की कोशिश किया, सो दैट भैया हम सब जो चीज़ एक अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाए, है ना? तो कहीं न कहीं इसको यूज़ किया गया जीजे मोहम्मद शाही को, ठीक है? जीजे जदीद मोहम्मद शाही। तो ही इनकॉर्पोरेटेड हिज वर्क्स in his works latest European astronomical knowledge as evidence from which he was based on levels। कहीं कि जो ऐसा नहीं कि वो it was he was not just I can say open to new research। He was open to new research and he obviously he used the European knowledge, right? He was fluent in Persian, Arabic and was acquired with J.J. Ulugh। So ड्रॉबैक्स क्या रहा है जैसी जैसी एस्ट्रोनॉमी में, एक क्रिटिकल दिखाता है हमारा नेचर का। एक ग्रेट absence of the use of a telescope till the 18th century in India। तो 18th century में टेलीस्कोप आया नहीं था, ठीक है। It made guessing observation outdated because he did not use the telescope observation। कहीं न कहीं उसने टेलीस्कोप यूज नहीं कर पाया, इसलिए तो उसका ऑब्जर्वेशन जो भी था कि हम भाई कब चंद्रग्रहण होगा, कब किस तरह से सूरज का एक तरह से उसका मूव रिवॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये सब बात नहीं कर पता पाया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ही डिड नॉट सेंड अ सीरीज ऑफ एम्बेसीज टू पोर्टुगल। तो बाकी जैसे कि पोर्टुगल जो था पूरा टच में था, एक तरह से इंग्लैंड का टच, हॉलैंड का टच, सारा ये जो टच में था।
तो कहीं न कहीं ये जो बाहरी दुनिया से जो क्या नाम है तुम्हारा सवाई जयसिंह वो टच में नहीं था, क्योंकि बाकी जो दुनिया में जो हो रहा था जैसे कि पोर्तुगल में, उसके बाद इंग्लैंड में, हॉलैंड में, सब चीज़ से टच नहीं था। तो कहीं न कहीं उस तरह वो नहीं कर पाया। Chasing observatories were based on Ptolemaic view repeated by Ulugh Beg of the world as इसको रिपीट किया, उलूग बेग को रिपीट किया, इसने बोला है कि भाई वर्ल्ड जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। मतलब इसने जो थोड़ा टॉलमी का जो व्यू है और जो कोपरनिकस का जो व्यू है, ये कोपरनिकस बहुत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है। सन जो है हेलियोस जो है वो सेंटर में है और बाकी जो सारे प्लैनेट वो रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। लेकिन बाद में टॉलमी का ये व्यू है कि भाई नहीं भाई, सन ही क्या है, रिवॉल्व कर रहा है सब प्लैनेट के चारों ओर। तो ये कहीं नहीं है, सेंट्रिक के अपोजिट है ना। तो वो थ्योरी टॉलमिक नहीं आता, कहीं दवाई साइंसिंग को तो कहीं ना कहीं वो हेलियोसेंट्रिक पे बिलीव नहीं कर, ब्रह्मगुप्त जैसे हो गए, कोपरनिकस हो, वो कहीं ना कहीं उस टॉलमिक व्यू रख पाए। तो इस तरह से कैसे स्क्रिप्ट, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशन था, ड्रॉबैक था। पहला लिमिटेशन था ही, बता दिया मैंने, पोर्तुगल और पर्सिया से नहीं टच में था, तो ये सब था, आउट ऑफ टच था, तो इस तरह से था। हम्म, तो पोर्टुगल से टच में था, ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ दी what were the Peishwa's bureaucratic management? Compare the Peishwa's bureaucratic management. Yeah, it is talking about the compare to the Shivaji and Peshwa management with the time of Imperial Mughal administration. So Imperial Mughal administration time पे था, वो पेशवा के साथ आप भैया आप उसको कंपेयर करिए। तो इंपीरियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन शासन काल का कैसे था, अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें पेशवा का, तो इंपीरियल मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, द मुगल स्टेट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन एलिमेंट्स। अगर हम बात करें मुगल स्टेट की बात करें, तो he centralized despotism with the emperor at the pivot of the central edifice enjoying the absolute power। तो कहीं न कहीं जो मुगल सल्तनत कहीं उसके सेंटर में था, वो enjoying highest power, absolute power they were enjoying, and he was at the pivot। The emperor was as a head of the state with unlimited powers, being supreme commander of the army. He was the supreme commander of the army. The emperor was supreme commander of the chief executive of civil administration and the supreme dispenser of justice. Mughal emperor had a council of ministers and other officers and nobles who were to discuss administrative practices. बल्कि जो like all councils, उसके पास council ministers हुआ करते थे, right? वजीर और दीवान हुआ करते, उसका प्राइवेट सर बोलते हैं उसको। तो मुगल के टाइम में जो वजीर और प्राइम मिनिस्टर होते वो दीवान वो हेड कर रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, वजीर जो, ठीक है, और ही वाज आल्सो असिस्टेड बाय द टू जूनियर ऑफिसर्स लाइक दीवान ए आम और दीवान ए खास। मुगल के टाइम में वजीर और दीवान हुआ करते थे, और ही वाज ही वाज हेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आज भी दीवान जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, और ही समटाइम्स आल्सो हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और उस टाइम में जो असिस्ट करने के लिए दीवान ए आम थे, फिर दीवान खास थे। दीवान खास तो तुम्हारे इनका इंचार्ज क्राउन लैंड्स है ना, खालसा से खास है, रिमेंबर दैट दीवान खास। दीवान आम जो इंचार्ज ऑफ सैलरीज, दीवान आम। मीर बख्शी हुआ करता था मुगल के टाइम में, द चीफ मिलिट्री एडवाइजर हुआ करता था मीर बख्शी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द कंट्री इंडिया। तो एक तो हुआ तुम्हारा दीवान एक खास, दीवान आम, और उसके पहला है वजीर दीवान, इसको बोलते हैं। ये तो मुगल सल्तनत के टाइम हुआ। बाकी और बात करें बाकी मीर बख्शी हुआ करता था, ही वाज चीफ मिलिट्री एडवाइजर बट ही वाज नॉट कमांडर। आई टोल्ड यू द एम्परर वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी।
was just the chief military advisor and the inspector general of the continent contingent. Yes, it was Khan Samanat. Yes, he was he heading the imperial department of the manufacturers and store supply. खान सामान क्या करता था, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे, उसके बाद डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर बाद उसके बाद एम्पेयर्स का डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर और स्टोर से सप्लाई जो होता था, इतने सारे स्टोर्स होते थे, सप्लाई होते थे, और उसके सारे को देखभाल कौन करते थे, तो हमारे तो मूल तसीब क्या होता था उस टाइम पे, क्या होता था कि जो morals को, पब्लिक morals को, उसका जो आई वांट टू tap the pulses, I want to know the pulse of masses. I want to know what people are thinking about myself, about emperor. So उसके लिए मुहस्सिन अपॉइंट किए जाते थे, राइट. सो यू नॉट टू नो द पब्लिक morals, what people are thinking about emperor. तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने एम्पायर को एक अच्छे तरह को अच्छे दिशा में आप मोड़ सकते हैं. सो एट द टाइम यू विल फाइंड द खान इज समवन हु वाज in charge of stores and manufacturers, right? So he was the master of manufacturers. So apart from that, you will find a muhtasi. So muhtasi हुआ करता था, and सदर सुदूर वगैरह ऑलरेडी हुआ करता था, and he was chief sudur of the सदर of the empire and guardian of the Islamic law and spokesman of the ulama. तो कहीं ना सदर सुदूर की हम बात करें, तो अगर हम कहीं को सदर सुदूर की बात करते हैं, चीफ सदर ऑफ द टाइम. तो अगर हम बात करें सदर सुदूर के बारे में, तो ही वाज द टाइम एम्परर, द guardian of the Islamic law and spokesman of the. तो कहीं न कहीं भाई उलमा का जो बाप हुआ करता था, तो सदर होता था, और जितने सारे जो गार्जियन होते इस्लामिक लॉज के, इस्लामिक लॉ और इस्लामिक लॉ इंटरप्रेटेड, एंड हु विल बी स्पोक्समैन ऑफ उलमा. आई एम द पर्सन सदर इज. ये पोस्ट का बहुत हद से ज़्यादा मिसयूज किया गया सदर इस्लाम का, क्योंकि इसमें आप इंटरप्रिटेशन वाली बात करते हैं. हाँ, इंटरप्रिटेशन वाली बात आया तो कहीं ना कहीं आप उसको मिसयूज और मिस इंटरप्रेट करेंगे. इस्लामिक लॉज को यू विल मिस इंटरप्रेट वेरियस टाइम्स. तो उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड देयर आर मेनी अदर ऑफिसर्स हु हेल्प द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल दरोगा तर्क, डाक चौकी हो गया, मुस्तिफ हो गया, मुस्ताफी हो गया, खवन सलार हो गया, ये सब जो ऑफिसर्स होते थे, दरोगा डाक चौकी, मुशरिफ हो गया, मुस्ताफी हो गया, है ना, खवन सलार हो गया, खावन सलार, ये सब जो थे उस टाइम में थे. दरोगा डाक चौकी, मुशरिफ चौकी, आज भी लगते हैं चौकी करके, दरोगा डाक चौकी, मुशरिफ हो गया, फिर मुस्ताफी हो गया, खावन सलार हो गया. अच्छा, अब आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम बात करें, आपको डिवाइडेड मुगल एम्पायर इन 12 सूबा. उसके अकबर टाइम पे था, which rose to 15 after the Deccan conquest. जैसे अकबर ने डेक्कन को conquest किया तो सुबह हो गया, उससे पहले तो 12 हुआ. By the time नहीं पता था, बहुत दिनों. अच्छा पासवर्ड क्या था? इसका पासवर्ड हमको पता नहीं. तो उसी पास हम पहले, मेरा वहाँ होता था, मेरा पता है, लेकिन इसमें काम नहीं करना होगा. पीछे बगल हो, उधर देखो, उधर 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 उधर, तो मेरा पहले हुआ करता है, उसका पासवर्ड काम वो खत्म हो गया. इसका हम लोग कनेक्शन में करवाए ना, इसका पता. तो भाई कल if I talk about the provincial administration, right? So after dividing the Mughal Empire into 12 subas, already 15 subas were there after conquering Deccans. By the time of Aurangzeb reigned, the number of provinces stood at 21, right? When Aurangzeb comes, obviously there was increase in the number of provinces, right? Every subas was governed by Sweta, and he was assisted by other officers like Diwan, Bakshi, Fauzars, Kotwals, Qazis, Sadar Amir, Parangu, and Patwari. So as a provincial, you will find that Patwari were there, Parangu were there, right? So Kotwal were there, Kotwal was a city,
administration of maintenance of law and order. Faujdar, you will find that, like Boxy, Diwan, Boxy होता था. There are many officials you will find, because obviously state level में तो बहुत बड़ा area होता है, because you have to because there are a hell lot of officers you have to provide, because central level का कहीं कहीं centralized होता है, कहीं उसका scope limited होता है. लेकिन जैसे हम state level में बात करते हैं, you will find that there are a lot of the officers are working, because that's why IS and IPS services are created, because in order to assist the state in a cooperative manner. That's the principle of cooperative federalism. Why? Because if you say state, because state percent बहुत बड़ा होता है, right? Because entire centers has been working with states, right? And states are so much big, right? And also state has been bifurcated into the local administration. So वहाँ तो और बहुत ज़्यादा पब्लिक डिपार्टमेंट वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं. तो इसलिए कहीं पे बहुत सारे ऑफिसर्स जो हो रहे हैं, फौजदार, you will find chief, you will find Bakshi, Diwan, Amil, Kanungo, you will find Patwari, Sadi, Paragwa. तो कहीं पे ये सब डिवीजन हो रहा है. सुबेदार एडल्ट बिल्डेड बोथ सिविल और मिलिट्री पावर. सुबेदार के पास जो होता था वो दोनों पावर भाई, उसको सिविल का पावर अधिक पावर था, मिलिट्री का पावर. उसको मन है वही सेना को खड़ा कर देगा. अभी सेना को उसका मन है वही सेना इस पे अटैक कर दूर कर देगा. बाकी सिविल का पावर बहुत सारे जो सिविल एस्पेक्ट्स है ना, कहीं 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 इंस्पेक्शन में गए हम, है ना, तो बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना, तो कोई का सेल पावर जैसे हो गया, मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं हम. तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक का प्राइस है, प्राइस सब डिमांड सप्लाई कंट्रोल अधिक कर रहे हैं, सप्लाई कंट्रोल, ये सब सेल पावर हो गया. कहीं का सदर जो हुआ संविधान हुआ करता था, वो बस के पास दोनों पावर हुआ करता था, सिविल का पावर और मिलिट्री पावर. ठीक है. द हेड ऑफ द सरकार वाज फौजदार. इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार का जो हेड होता था फौजदार हुआ करता था. फौजदार वो वाज चार इन मेंटेन लॉ एंड. सरकार जो सुबह जो है वो सरकार में बटा हुआ करता था. सरकार का हेड होता था फौजदार. फौजदार जो होता है मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है. अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ. परगना बिंग एक यूनियन ऑफ सरल. तो सरकार वो टूटा परगना. परगना जो क्या होता है, बहुत सारे विलेज को बना के होता था. एडमिनिस्ट्रेशन वाज carried out by number of officers such as सिकदार, अमील, कोटदार और बीटिक चीफ. अब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता था परिणाम में, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हुआ करते. कोटदार हो गया, बीटिक चीफ हो गया, बीटिक चीज वगैरह, ये सब जो है इस तरह से मतलब ये सब ऑफिसर्स वगैरह उसमें काम करने लगे, राइट. सिद्धार, अमिल, कोटदार, बीटिक चीज, राइट, हुआ करते एट द लेवल ऑफ लोकल, राइट. बीटिक चीज यू विल फाइंड यू विल फाइंड कोटदार, यू विल फाइंड अमिल, यू विल फाइंड सिद्धार. सिद्धार हुआ था जब सुबह वगैरह में, तो कोई उस तरह का नहीं था. सुबेदार हुआ करता था वो तो एक तरह से प्रोविंस लेवल था. यहाँ पे इसको सुबेदार में सिकदार हो गया. इसको आम इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे कोटदार, दो तीन नाम अलग आ गए, कोटदार, सिकदार, फिर बेटिक चीज हो गया. तो ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीलिंग करता था. The Mughal state was bureaucratized state which ran according to the detailed rules and regulations as evidence of दस्तूर अमाल रूल्स. उसका में बहुत बड़े एक तरह से रूल्स बुक हुआ करते. दस्तूर अमाल एक तरह से रूल्स बुक हुआ करते. इस तरह से ब्यूरोक्रेसी चलेगा. अकबर कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़े इस तरह से प्रोमिनेटर था. बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी का वो अगेंस्ट से, अगर उस टाइम अगर ब्यूरोक्रेसी ना हो सब हुआ करता तो अकबर का बहुत बड़ा एक तरह से वो. इससे लोग हो गया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फिर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हो गया. उसके बाद हम बात करते हैं इस कारण में मराठा के बारे में. बात करें मराठा के टाइम में कैसे कैसे कुछ डिफरेंट हुआ करता था. मराठा के बारे में हम देखेंगे. मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन था कि हाँ किस तरह से वो जो मराठा का जो पेशवा सिस्टम था किस डिफरेंट था. तो मराठा के नौ कंसिस्टेंट स्वराज एंड मुगलाई. कंसिस्टेंट ऑफ स्वराज एंड मुगलाई, उसको दो दो एस्पेक्ट से बना हुआ था मराठा के. एक स्वराज का प्रिंसिपल था, एक मुगलाई का प्रिंसिपल था. कहीं भी मुगल एलिमेंट में जुड़ा हुआ था और स्वराज अपना उसका इंडिपेंडेंट था. स्वराज रिफर टू एरिया ऑफ मराठा सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राज्य एंड वाज सब्जेक्ट टू मराठा एंड अदर एक्सटर्नल रेस्ट. तो उसका दो पार्ट होता है. जो भाई मराठा बोलते हैं भाई दो अधिकार है. एक अगर अधिकार मेरा अपना है, स्वराज इसको बोलते हैं. स्व मतलब अपना, राज अपना राज. हाँ मेरा अपना राज्य है जो मेरे अंदर आता है. और जो मुगलैया है वो मेरे बाहर आता है. और मेरा
तो कहीं न कहीं हम मराठा अगर हम बात करें तो कहीं स्वराज और मुगलया बात बात कर रहा था। तो स्वराज अगर हम बात करें कांसेप्ट ऑफ स्वराज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर द फैक्ट दैट it was like your own administration area. While Mughalaya is different. So to protect people living in the Mughalaya area, Chowth and Sardes laws, they can punish people, they can have military power, they can be commander of the army. So everything. Council of Head Ministries Astapradhan was very या प्रधान इसका प्राइम मिनिस्टर हुआ करता उस टाइम में उसका ड्यूटी वही था कि जनरल वेलफेयर करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट करेंगे अमात्य हुआ करता जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता इंचार्ज ऑफ चेकिंग दी एंड काउंटर साइनिंग और अकाउंट्स राइट उस टाइम में अमात्य हुआ करता था अमात्य वाज फाइनेंस मिनिस्टर करेक्ट अमात्य और फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ चेकिंग दी एंड काउंटर साइनिंग ऑफ ऑल पब्लिक अकाउंट्स ऑफ किंगडम अमात्य क्या करता था जो कि जितने सारे पब्लिक किंगडम अकाउंट I am the I am the prime minister. I will countersign. जो मेरे पास सामने कागज आया तो I will do I will verify okay this the amount which bears the or the money which bears in this document is correct or not. If it's correct, I will countersign. If not, I will verify it. So what Amat were doing countersigning the I can say the document. So he was also the charge of checking the and countersigning of the account whether it is correct or not. So मंत्री मेंटेन a detailed account of king and his court. एक प्रकार से अगर हम बात करें मंत्री का तो मंत्री क्या करता था मंत्री क्या करता भाई वो मेंटेन करता था a detailed account of kings and his court एक तरह से कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था मराठा के पास भाई कोई भी किंग और क्या कर रहा नहीं कर रहा उसको मेंटेनिंग सारा कारोबार वो करता था तो सुमंत क्या करता सुमंत और दावी इसके दूसरा नाम है सुमंत क्या करता रिवाइज किंग ऑन एक्सटर्नल affairs and wars I told you yesterday I have told you Sumant basically Su month का अच्छा होता month is like something advice month and Sumant basically advice देता था किसको kings को in terms of warfare in terms of external affairs in terms of peace so this were the Sumant were David Sumant were also known as David and they used to advise him emperor about peace about war about external affairs Sumant का बहुत बड़ा एक तरह से रोल होता है और इंटरनेशनल रिलेशन का रोल इम्पोर्टेंट to look after the correspondence of king and check the accounts of Paragna. Paragna के अकाउंट चेक करने के लिए और जो भी भाई को पता है कि कोई भी अकाउंट होता है परगना का अंदर बहुत सारा सिद्धार होता था अमीर हुआ करता था सब परगना नहीं सुधार हुआ करता परगना नहीं सही सिद्धार हुआ करता था अमीर हुआ करता था कोटगार हुआ करता था बहुत सारे परगना में वर्क करते बिजनेस वेयर थे उसके अकाउंट को वेरीफाई करने के कोई जो चाहिए ना कुछ ससीब वगैरह होता था तो सिद्धार वगैरह ये मुगल सुल्तान था लेकिन कहीं मराठा ने मुगल कॉपी किया तो कहीं नहीं इसलिए तो परगना का जो हेड करता था मतलब अकाउंट्स को छानबीन करता था सचिव करता था एंड ही वाज लुकिंग आफ्टर कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी किंग के सामने जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं भाई जो किंग के सामने जो भी चिट्ठी पढ़ती चिट्ठी वगैरह ला रहे तो आई विल लुक आफ्टर दिस चिट्ठी है सही है कि नहीं सचिव का काम ये था तो कॉरेस्पॉन्डेंस का जो रिलेटेड जो काम होता था वो सब करता था बाकी सुमन का काम तो कोई मैंने बताया इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेजमेंट करना है ना वार सिविल वार वगैरह वार और पीस के लिए राजा का एडवाइजर बाकी तुम्हारे अमात्य का रोल है किस तरह से वो फाइनेंस का काम अमात्य के पार्ट टीम्स वर देयर राइट विश्वास का हाई हो ही गया उसके बाद सुमंत हो गया सचिव को बता उसको दंड नायक हो गया दंड अध्यक्ष हो गया ही वाज स्टेटिस्टिकल हेड ऑफ कैनोन्स लॉज एक्सेट्रा कोई भी लोगों को सलाह देना है कोई भी लोगों की है या नहीं कोई आदमी गलत काम किया मोरालिटी कहीं क्वेश्चन में आया तो उसके लिए जो काम उसके लिए डिपार्टमेंट क्या है तो दंड अध्यक्ष है ना कहीं तो जज भी है और कोई भी लॉज को वायलेशन हुआ है
बहुत बड़े लॉज को वायलेशन उसके दंड अध्यक्ष का कार्यभार था, उसका न्यायाधीश का भार। न्यायाधीश में उसका वो चीफ जस्टिस हुआ करता था, जो कि सिविल और मिलिट्री जस्टिस जस्टिस को डिस्पेंस किया है। अब अंतर क्या है, दंड अध्यक्ष और न्यायाधीश में अंतर क्या है कि न्यायाधीश बेसिकली काम तो मिलिट्री जस्टिस करना, जो बड़े-बड़े बहुत बड़े जो मिलिट्री वगैरह को छोड़ गए